Alright, so we're gonna start the biological approach की second study, Dement and Kleitman, 1957. This is one of those studies जो 9698 में भी था, पुराना सिलेबस में भी. तो इसका मतलब ये है कि इस स्टडी के अंदर थोड़े डिटेल्ड सवाल पूछे जाएंगे क्योंकि ये बहुत ही पुराना घिसा पिटा स्टडी है. So anyways, biological approach, second study, Dement and Kleitman. And basically what we're going to study, or the psychology, basically what psychological phenomena are we going to study. Please remember that psychology being studied and aim में फ़र्क है. Psychology being study का मतलब है कि what psychological phenomena are you studying. तो इसके अंदर जो psychological phenomena that you're studying is has to do with REM, or rapid eye movement sleep. So rapid eye movement sleep, REM, it's also known as paradoxical sleep. Paradox का मतलब होता है कि something which contradicts itself. तो REM के अंदर again when you sleep तो तुम्हारी आंखें हिलती होती हैं, and that's why it's called the rapid eye movement sleep. But इस sleep stage के अंदर what happens कि your eyes are moving, तो इसका मतलब ये है कि your brain is active. But what happens कि your body उस वक्त is not aware कि तुम्हारे आसपास क्या चल रहा है. तो even though the brain is highly active, but your body or the brain itself is unaware or insensitive to whatever happens around you or the external stimuli. So even though it's active, it's unaware of the external stimuli. So that's why it's also called the paradoxical sleep. And that's what we're gonna be focusing on today. So when you talk about REM, so obviously there's also NREM, the non-rapid eye movement sleep. So basically what happens is your sleep happens in cycle REM, then NREM, then REM, NREM, then REM, then NREM, and so forth. तो REM तो पता है कि वो sleep का stage जहाँ पे तुम्हारा brain active होगा, but brain is insensitive to external stimuli and आंखें हिल रही होंगी. But what about the NREM जिसके अंदर आंखें नहीं हिल रही होती? What about that sleep stage? तो NREM के अंदर 4 stages होती हैं. And what you need to remember about NREM is that out of all those 4 stages, the fourth stage is the deep sleep stage. So कभी कभार if you sleep and तुम्हें लगता है कि गहरी नींद सो रहे हो, तो probably तुम NREM के चौथे stage के अंदर हो. And अगर if you're a light sleeper, हल्की नींद सो रहे हो, तो you might be in NREM की first stage. So basically NREM has 4 stages. First is light stage. First stage is the light sleep. Fourth stage is the deep sleep, and then you have the REM, which is also called the paradoxical sleep. Bit of background के what happens before the study, क्योंकि Dement and Kleitman की study 1957 में, तो what happens के 1952 के अंदर 5 years before Dement and Kleitman, and this is the background. Eugene Azarinsky, इसने EEG machine बनाया था. He was messing around with the EEG machine, and he thought that the EEG machine was malfunctioning. So he wanted to test it out whether it's malfunctioning or not. So he told his son, bhai, I want to check the EEG machine on you. So his son, even though he drank coffee, but he fell asleep. And basically the EEG was connected to his son, so when his son was sleeping, EEG was still showing that eyes are moving. So Eugene Azarinsky was like, mera beta so raha hai, but how is EEG showing kiski aankhein hil rahi hain? And that's how he found out ke REM के अंदर आंखों के साथ brain भी active होता है. तो basically ये गलती से इसको पता चल गया था कि EEG के थ्रू कि even though people sleep, brain is also active in REM. So now 5 years later, 1955 के अंदर 3 years later, what happens कि Azarinsky and Dement and Kleitman के अंदर जो दूसरा बंदा है Kleitman, they team up, and what happens
कि they want to check the eye movement, rapid eye movement sleep stage of schizophrenics using EEG. And what they found out कि normal people and schizophrenics both show eye movements, and basically eye movements were related to their dreaming. So basically इससे पता चलता है कि again schizophrenics and normal people do show eye movement. And but उस वक्त the research was थोड़ा बहुत subjective, and it wasn't a bit structured, ज़्यादा structured नहीं था. So all Azarinsky and Kleitman found that schizophrenics जो थे they sleep in cycles, REM फिर NREM. They found out कि उनके अंदर cycles होते हैं, and basically eye movements are found in schizophrenics and normal people as well. Now we come on to our own study 1957 के अंदर Dement Kleitman. तो as you know कि इस research से पहले अब बहुत काम हो चुका था, but this study is going to investigate REM in depth. The previous studies kind of focuses on the presence of REM, कि होता है कि नहीं होता, and previous studies के through हमें पता चलता है कि भाई REM होता है. This study is going to look in depth कि REM के अंदर और क्या क्या mechanisms हैं और किस तरीके से function करता है. So हम 3 चीज़ देखेंगे REM के बारे में. Number 1, we're gonna basically hypothesis. So we're gonna see कि dreaming कब occur होती है. Does it occur in REM or NREM? So we wanna see कि when you dream in REM or NREM. The second hypothesis, and this is very important because kids kinda have difficulty understanding it. Second hypothesis का मतलब है कि basically if you sleep 5 minutes in real time, तो and if I wake you up कि भाई तुम ख्वाब कितनी देर तक देख रहे थे, will you tell me that you were dreaming for 5 minutes, or will your time duration be different? So basically, can you tell me how long you dream accurately, or will you not be able to tell me how accurately you dream? So basically, the longer your REM, right, जितना ज़्यादा तुम्हारी REM की duration होगी, right, does that basically help you estimate your dream time, or does it help you estimate dream time? तो precisely, easily, आसान लफ्ज़ों में REM जितनी देर तक होगा, right, उतनी देर तक क्या तुम्हारी ड्रीम लास्ट करेगी या नहीं करेगी. Hypothesis number 3, REM के अंदर आंखें हिलती होंगी, right. तो basically we're gonna say कि the direction your eyes move is related to what you're dreaming. Let's suppose if your eyes are moving vertically, so you're seeing something which has to do with vertical movements. अगर तुम्हारी आंखें horizontal ही रहेंगे तो you might be dreaming something जिसके horizontal movement हो रहा होगा. तो eye movement has a relationship with the content of the dream that you're seeing. So I hope the hypotheses are clear. Alright. So basically, hypothesis का मतलब है कि predicts कि there will be, all of these are, by the way, directional hypothesis. There will be का मतलब है hypothesis है. And if you change these words in या phrasing थोड़ी change कर to find out कर दोगे, तो that's basically becomes the aim. Investigate dream recall differs in NREM, REM, to investigate positive correlation between the length of REM and estimated length of dream. So जितनी देर तक REM रहेगा, क्या उतनी देर तक dream रहता है कि नहीं? And is the relationship between eye movement and dream content. Alright, so Dement Kleitman की aims, here we go, what we've discussed, कि dream कब होता है, REM or NREM, and number 2, REM time or dream time correlation है कि नहीं, and number 3, eye direction or dream content के आपस में relationship है कि नहीं. तो biological study के अंदर, biological approach के अंदर, it's said that biological approach is the most objective या scientific approach of psychology, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे instruments इस्तेमाल करते हो.
कॉग्निटिव अप्रोच के अंदर, सोशल अप्रोच के अंदर और लर्निंग के अंदर इतने सारे मशीनरी इस्तेमाल नहीं करते जितना तुम बायोलॉजिकल अप्रोच के इस्तेमाल करते हो, क्योंकि ऑब्वियसली बायोलॉजिकल फंक्शंस मशीनरी के थ्रू टेस्ट कर सकते हो. एंड इन दिस स्टडी देयर टू मशीनरीज. One is the EEG, one is the EOG. So EEG electroencephalograph and EOG electrooculograph. So EEG के अंदर basically you check के you see के brain waves of the you see the activity of your brain and your brain waves से पता चलता है. And EOG के अंदर you see the eye movement. तो ये जो दोनों चीज़ें हैं एक ही मशीन के अंदर इक्विप्ड हैं, बट बेसिकली दे टू डिफरेंट मशीन्स लेकिन एक ही चीज़ के अंदर फिटेड हुए हुए हैं. तो लेट्स टॉक अबाउट द EEG पहले. EEG checks के whether your brain is active or not, and it records brain waves, and basically is going to record your brain waves 3 centimeter per second. EOG, however, electrooculograph, records your eye movement. It tells you कि whether तुम्हारी आँखें जो हैं are they active or not, and which direction are they moving or not moving. Though EEG has to do with the brain, EOG has to do with the eyes. And थोड़ा बहुत दोनों में फ़र्क है. EEG measures the brain waves in 3 centimeter per second. EOG uses 3 millimeter या 6 millimeter per second. तो EEG सेंटीमीटर में क्यों है and EOG मिलीमीटर पे क्यों है? Basically अगर तुम कागज़ खींचते हो 3 millimeter per second and 3 centimeter per second, तो गेस कौन सा कागज़ तेज़ी से खींचोगे, सेंटीमीटर वाला मिलीमीटर वाला? ऑब्वियसली 3 millimeter per second वाला थोड़ा आहिस्ता खिसकाओगे compared to 3 centimeter वाला कागज़. Now the thing is the brain is faster than the eye, right? तो if the brain is faster than the eye, तो obviously उसकी brain waves भी तेज़ी से आ रही होंगी, right? तो ऑब्वियसली उसकी अगर ब्रेन वेव्स तेज़ी से आ रही होंगी, लेकिन अगर आपने कागज़ बहुत ही स्लो हिलाया तो शायद एक ही जगह पे बहुत सारे ब्रेन वेव्स बनना शुरू हो जाएं कागज़ के ऊपर, जिसके वजह से तुम्हें शायद इतना क्लियरली नज़र नहीं आएगा कि एक वेव कहाँ ख़त्म हुआ, दूसरा वेव कहाँ ख़त्म हुआ. तो ऑब्वियसली तुम्हें कागज़ पर तेज़ी से खींचना पड़ेगा. 3 centimeters per second पे कागज़ खींचना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा, ताकि जो ग्राफ्स के जो वेव्स हैं, ब्रेन वेव्स, वो स्प्रेड आउट हो जाएँ. लेकिन EOG ऑक्यूलोग्राफ के अंदर आई मूवमेंट इतने तेज़ नहीं होते, तो यू कैन अफोर्ड टू मूव इट वेरी वेरी स्लोली. तो दैट्स वाई देयर इज अ डिफरेंस इन स्पीड. तो बेसिकली व्हाट यू हैव टू रिमेंबर कि EOG एंड EEG दोनों के फुल फॉर्म क्या है, दोनों क्या रिकॉर्ड करते हैं, दोनों की स्पीड ऑफ रिकॉर्डिंग क्या है. एंड दे डू आस्क एन एग्जाम कि भाई EEG का क्या मतलब है, EEG क्या मेजर करता है, राइट? डीमेंट क्लाइटमैन के अंदर ब्रेन एक्टिविटी, प्लीज़ रिमेंबर ब्रेन एक्टिविटी EEG से होता है, एंड आई मूवमेंट EOG से के अंदर होता है. प्लीज़ डोंट कन्फ्यूज द टू. Acha, identify one reason for using this technique to measure brain activity. Basically, why we using EEG. Number one is a machinery, right? So हर किसी के लिए setting same होगी, तो it's going to be objective, it's going to be reliable. Everyone is going to be tested the same way. मतलब everyone has the 3 centimeter per second का recording क्या कहते हैं procedure. And basically it's also increase validity as well. So you can see obviously बहुत सारे controls हैं. The machine is going to be kept the same for everybody, right? But now look at the participants who are going to be part of the study. Now basically शुरू में 9 लोग थे and वो opportunity sampling के तौर पे आया था, and 9 लोग के अंदर 7 males and 2 females. But what happened कि 4 of them withdrew, so you're left with 5 participants in the end. लेकिन जब हम रिजल्ट कंसिडर करते हैं तो हम 9 के 9 को लेते हैं. एंड व्हाट वन थिंग क्लेवर थिंग विद दैट दे डिड कि डिमेंट क्लाइटमैन ने ये नहीं बोला कि 4 ने विड्रॉ कर लिए, इन्होंने ये बोला था 4 ने जो विड्रॉ किए हैं हमने उनके जो 4 के रिजल्ट्स जो है ना, बाकी 5 लोग जो रह गए थे उनके रिजल्ट्स को कंफर्म करने का इस्तेमाल किया है. तो दैट्स अ क्लेवर वे ऑफ सेइंग कि स्टडी के अंदर 9 लोग हैं, अभी भी 4 विड्रॉ करके थे, लेकिन उनके रिजल्ट्स हमने बाकी 5 लोग के रिजल्ट्स को कंफर्म करने के लिए इस्तेमाल किया. तो बेसिकली योर 5 पीपल आर द मेन पार्टिसिपेंट्स. शुरू 9 से हुए थे, 5 रह गए,
and those 5 participants stayed in the lab 6 to 17 nights. तो बेसिकली 6 to 17 नाइट्स के अंदर ये लैब के अंदर आते रहते सोते रहते, जिसके अंदर इनके ऊपर रिकॉर्डिंग हुई थी. एंड बेसिकली 6 to 17 नाइट्स के अंदर they were woken around 50 to 77 times. तो बेसिकली when they're woken up 50 to 77 times, तो उसका मतलब उनके डेटा जो है 50 to 77 times रिकॉर्ड किया हो गया होगा. तो that's the number of observation here, that's the number of data that they recording that they gathered. So 5 people spending 16 to 17 nights in a lab, and they were woken up 50 to 77 times. All right, so that's fun. That's fine. So now let's break it down. What actually happens, and I'm gonna explain by aim, A1, aim 1, aim 2, aim 3. तो अभी तक अगर aim समझ में नहीं आया तो this might clarify. तो aim 1 के अंदर we wanna find out कि भाई dreaming कब occur होती है, REM or NREM, right? So that's the idea. So what's gonna happen ke, let's suppose ke the person is sleeping, a participant is sleeping, and uske brain waves पता चल रहा होगा कि भाई बंदा जो है REM में NREM में, right? तो ये EEG से पता चल जाएगा कि बंदा NREM और REM में. तो basically we wanna find out कि ड्रीम किसके अंदर आता है. तो what we do कि if a person is sleeping, and we will wake them up in NREM sometimes, and we will wake them up in NREM sometimes, right? लेकिन हम बंदे को तो नहीं बताएंगे ना कि कौन से स्टेज में तुम्हें उठाया, क्योंकि अगर बता देंगे तो शायद उसके आंसर इन्फ्लुएंस हो जाएंगे. तो he won't know which stage he was woken up. Only we know, only the experimenters know. तो first aim के लिए, for the first aim, right? We either wake them up in NREM or REM, and we ask them one simple thing. By the way, we wake them up through our doorbell. So, you know, when we want to wake them up, bell ring hota tha, and as soon as the bell rang, the participants had to tell us whether they were dreaming or not. So let's suppose in this case banda kehta I was not dreaming, and let's suppose हम REM के अंदर उठाते हैं doorbell के through, and REM में उठने के बाद बंदा कहता I was not dreaming. But let's suppose कि he says he was dreaming. तो if he says he was dreaming, कि फिर क्या करना होता है, इसके बिस्तर के बराबर टेप रिकॉर्डर पड़ा होता है, एंड उस टेप रिकॉर्डर के अंदर he is supposed to tell us what was he dreaming. अब कंटेंट बताओगे. तो बेसिकली REM और NREM के अंदर जो भी हो, हमने उठाया, रिंग किया, उठा, tell us are you dreaming or not. नहीं ड्रीम कर रहे, कोई बात नहीं, सो जाओ. If you're dreaming, तो then you tell in the tape recorder what exactly were you dreaming. So this was how the first aim was checked कि ड्रीम किसके अंदर ज़्यादा आती है, REM और NREM के अंदर. Alright, to describe the procedure used by Dement Kleitman to collect the data about dream recall. Please remember कि dream recall का मकसद ये है कि ड्रीम ज़्यादा किस में आ रही है, NREM और REM. Are you able to recall your dream in REM or are you able to recall your dream in NREM? तो बेसिकली हमने क्या बोला था कि doorbell, wake them up, एंड रिकॉर्डिंग डिवाइस के अंदर पार्टिसिपेंट को बोलना था कि ड्रीम कर रहे थे, नहीं कर रहे थे. इफ़ दे वर ड्रीमिंग, दे हैड टू टेल द कंटेंट ऑफ द ड्रीमिंग. एंड हमने बोला था कि ये पार्टिसिपेंट्स को फर्स्ट एम के लिए REM और NREM के अंदर दोनों में उठाते हैं. एंड अगर कोई सवाल होता है तो नॉट ऑलवेज, लेकिन कभी कभार एक्सपेरिमेंटर आता है कमरे के अंदर टू आस्क मोर क्वेश्चंस. तो दैट्स द होल आइडिया कि ड्रीम रिकॉल स्पेसिफिकली किस तरह चेक करते हैं. सो द सेकेंड एम जो आपको याद होगा कि बेसिकली REM जितनी ड्यूरेशन के लिए आती है उतना ड्यूरेशन के लिए तुम्हारा ड्रीम आता है कि नहीं आता, राइट? और ये आसान लफ्ज़ों में, let's suppose you dream for 5 minutes. I wake you up. I ask you कितनी देर तक ड्रीम कर रहे थे. Are you able to correctly tell me कितनी देर तक ड्रीम कर रहे थे या नहीं? So it's gonna be dream time versus actual time, right? तो बेसिकली इसके अंदर we only wake you up सेकेंड एम के लिए, क्योंकि हमें देखना है कि भाई ड्रीम तुम्हें कितनी देर तक लगता है कि ड्रीम आई थी. तो our assumption is कि REM के अंदर ड्रीम्स आएंगे, तो हम तुम्हें सिर्फ REM के अंदर उठाएंगे फॉर द सेकेंड एम, NREM के अंदर नहीं उठाएंगे. तो REM के अंदर तुम सो रहे हो, we wake you up through the doorbell, right? And we ask you a simple question. How long do you think you were dreaming? Right?
you're supposed to tell I was dreaming for 5 minutes or I was dreaming for 15 minutes. तो बेसिकली इसके अंदर रिसर्चर्स ने तुम्हें क्राइटेरिया दे देता है कि तुम दोनों में से एक आंसर बोलेगा 5 मिनट्स और 15 मिनट्स. एंड वाई 5 and 15? क्योंकि रिसर्चर्स हमेशा देखते थे कि EEG के थ्रू, लेट्स सपोज यू आर स्लीपिंग एंड EEG के अंदर तुम्हारे REM स्टेजेस आना शुरू हो गया. EEG के अंदर पता चल गया कि भाई आप REM 5 मिनट तक आप REM के अंदर थे. डोरबेल से उठाया एंड फिर आपको उठाने के बाद पूछा कि भाई आप कितनी देर तक ख्वाब देख रहे थे. वी अज्यूम कि जब तुम 5 मिनट के अंदर 5 मिनट के लिए तुम REM के अंदर थे तो तुम्हारा ख्वाब भी 5 मिनट तक आना चाहिए, राइट. बट लेट्स सी क्या एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या रिजल्ट आते हैं. बट बेसिकली वो या तो तुम्हें 5 मिनट बाद उठा देते या 15 मिनट बाद उठा देते. तो उसके बेस पे तुम्हारा जो आंसर होगा तुम्हें बताना पड़ता था कि भाई ख्वाब तुम्हारा 5 मिनट के लिए आया होगा या 15 मिनट के लिए आया होगा, राइट. तो दैट्स व्हाई 5 and 15 हमने सेलेक्ट किया था. एंड फॉर द थर्ड एम कि आई मूवमेंट रिलेट्स विद द ड्रीम कंटेंट और नॉट. तो ऑब्वियसली वी विल वेक यू अप व्हेन यू ड्रीमिंग. तो वी अज्यूम कि ड्रीमिंग ज़्यादातर REM के अंदर होगा. तो सेकंड एंड थर्ड एम के अंदर REM के अंदर उठाते हैं. ओनली द फर्स्ट एम के लिए हम तुम्हें NREM के अंदर उठाते हैं. तो वी वेक यू अप अगेन, डोरबेल रिंग किया एंड दिस टाइम क्योंकि आई मूवमेंट की बात हो रही है, राइट, आई मूवमेंट. तो बेसिकली हम EOG को भी कंसल्ट करेंगे विच इज़ गोइंग टू टेल अस कि भाई आंखें तुम्हारी किस डायरेक्शन में हिल रही हैं. EEG तो बताएगा कि भाई आपकी ब्रेन एक्टिविटी किस स्टेज के अंदर है. EOG इज गोइंग टू टेल अस कि भाई आपकी आइज किस डायरेक्शन में चल रही हैं, राइट. सो EOG इज गोइंग टू रिकॉर्ड 4 टाइप ऑफ मूवमेंट्स. या तो मेनली वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और मिक्स्ड, जिसके अंदर दोनों वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आएगा, और लिटरल और नो मूवमेंट. तो बेसिकली इज गोइंग टू रिकॉर्ड 4 टाइप्स ऑफ मूवमेंट. एंड बेसिकली लेट्स सपोज के हमने EOG के अंदर देखा कि भाई तुम्हारे आई मूवमेंट्स मेनली हॉरिजॉन्टल आ रहे हैं. तो वी वेक यू अप यूजिंग अ डोरबेल एंड वी आस्क यू कि भाई तुम ख्वाब में क्या देख रहे थे. एंड वी गोना सी कि क्या तुम्हारा ड्रीम कंटेंट जो है EOG के अंदर जो रिजल्ट आया था कि तुम्हारी आंखें हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है कि नहीं कर रही, क्या डज इट रिलेट विद द कंटेंट दैट यू आर सेइंग दैट यू ड्रीम और नॉट. तो देयर गिव अ क्राइटेरिया कि भाई आंखें जो हैं थोड़ी देर तक हिल सकती हैं. तो they will only wake you up if your EOG के अंदर आई मूवमेंट was consistent for 1 minute. तो let's suppose अगर तुम्हारी आंखें vertically मूव कर रही हैं only for 10 seconds, they won't wake you up. The vertical eye movement, whatever eye movement had to be maintained for 1 minute, for at least 1 minute. Then they will wake you up. So basically this is how the third aim was recorded. Does the eye movement relate with the dream content or not? अच्छा, तो the reason I separated these aim by aim कि भाई हर aim को किस तरह रिकॉर्ड किया गया था, so that you understand what's actually happening. But you know, अगर हम हर aim को अलग स्टडी करें तो obviously time consuming होता है. तो what happened in real life कि सब कुछ एक साथ हो रहा था. तो बेसिकली एक ही दफ़ा उठा के तुमसे तीनों के 3 सवाल पूछेंगे भाई कि ख्वाब देख रहे थे, नहीं देख रहे थे, तुमने क्या देखा, कितनी देर तक देख रहे थे. तो इन रियल लाइफ इन दैट एक्सपेरिमेंट ये सब चीज़ें एक साथ हो रही होंगी, लेकिन मैं समझाने के लिए अलग अलग कर दिया था. ऑलराइट, तो बिट ऑफ क्विज के भाई व्हाट एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन इज़ दैट, ये कौन सा एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन है. तो बेसिकली 3 एम्स हैं, तो इट्स गोना बी अ वेरी tricky for you guys. So we're gonna break it down by aim. The first IV, first aim के लिए IV देखते हैं. Basically first aim के अंदर we're gonna see के भाई dream आपका आता है किस में, REM और NREM. तो what we're measuring is the dream recall, कि dream कब आता है. So that's the DV, right? But IV क्या होगा? IV is going to be REM or NREM. Does dream take place in REM or NREM? तो NREM और REM IV है, independent variable. Now ये जो IV है, right, REM and NREM, ये कुदरती तौर पर आ रहा है. हमने तुम्हारे दिमाग में क्रिएट नहीं किए, पार्टिसिपेंट के दिमाग में क्रिएट नहीं किए, ये कुदरती तौर पे आते हैं.
तो क्योंकि नेचुरली अकरिंग IV है तो we're gonna call it a Quasi experiment. तो aim1 के लिए तुम देखो तो aim1 becomes a Quasi experiment. Alright, तो Quasi experiment है क्योंकि IV नेचुरली अकरिंग है. Alright, तो अब देखते हैं कि भाई डिज़ाइन कौन सा है. डिज़ाइन को देखो अगर कि लेट्स सपोज तुम्हें REM के अंदर भी उठाएंगे एंड तुम्हें कभी कभार NREM के अंदर भी उठाएंगे. तो one person gets to be woken up in two conditions. तो it's not independent, it's repeated क्योंकि तुम REM में भी उठाए जा रहे हो और NREM के अंदर भी उठाए जा रहे हो. तो basically you're woken up in two levels of the IV. So that's why it's a repeated major experiment. So the setting is going to be a Quasi experiment and the design is going to be repeated measures for the first aim. Let's talk about the second. Second aim के हिसाब से क्या बनता है? Well, second aim के अंदर we wanna find out कि भाई dream तुम्हारे तौर basically if you still don't understand the second aim, basically it means कि भाई you're sleeping and REM से पता चलता है कि भाई आप ख्वाब जो है 5 मिनट के लिए देख रहे थे. REM के थ्रू पता चल गया मुझे. I wake you up and I ask you कि भाई आप कितनी देर तक ख्वाब देख रहे थे. Does your answer match the actual time that you were dreaming or not? तो बेसिकली मैं तुम्हें दो तरीके से उठाऊंगा. या तो मैं तुम्हें 5 मिनट बाद उठाऊंगा and I'm gonna ask you भाई ख्वाब कितनी देर तक देख रहे थे. या तो मैं तुम्हें 15 मिनट बाद उठाऊंगा and I'm gonna ask you भाई ख्वाब कितनी देर तक देख रहे थे and I'm gonna see कि does your answer match the time I recorded. तो basically 5 और 15 मिनट is going to be the IV and the DV is going to be what's your answer going to be. Does your answer match my answer? तो the participants estimation, the participants answer is going to be the DV but the IV is going to be 5 and 15. तो ये 5 and 15 का जो IV है ये नेचुरल नहीं है, ये मैंने खुद क्रिएट किया है. तो बेसिकली Quasi तो नहीं होगा, ये लैब एक्सपेरिमेंट बन जाएगा क्योंकि IV मैनिपुलेटेड है और ये लैब के अंदर हो रहा है. तो IV अगर मैनिपुलेशन है और लैब के अंदर होता है इट बिकम्स अ लैब एक्सपेरिमेंट. उसके अंदर हालांकि लैब के अंदर होता है लेकिन NREM REM नेचुरल अकरिंग IV था. तो दैट्स aim1 Quasi एक्सपेरिमेंट है. aim2 के हिसाब से लैब एक्सपेरिमेंट बन जाता है. नाउ 5 and 15 इज द IV. तुम्हें मैं 5 मिनट के बाद भी उठाऊंगा कभी कभार एंड 15 मिनट के बाद भी उठाऊंगा कभी कभार. तो मैं तुम्हें कभी दोनों कंडीशन के अंदर उठाऊंगा 5 and 15. तो तुम दोनों लेवल्स ऑफ IV के अंदर इस्तेमाल हो रहे हो. तो द aim2 इज ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ रिपीटेड मेजर डिज़ाइन. aim3 kind of doesn't make much sense क्योंकि इतना ज़्यादा IV नहीं. I try to make sense out of it. aim3 के अंदर क्या बनेगा. तो aim3 would be कि does your dream content match with the eye movement. तो basically eye movement is the IV and जो तुम बोलोगे that's gonna be the DV. तो eye movement के हिसाब से क्या तुम्हारा ड्रीम कंटेंट मैच होता है कि नहीं होता. तो बिकॉज वी मैचिंग ड्रीम कंटेंट तो DV बन जाएगा. But what does the dream content depend upon? Your eye movement. So your eye movement becomes the IV. Eye movement की direction becomes the IV. So basically हमारे पास eye movement की direction 4 हैं. Lateral or no movement, horizontal, vertical and mixed. So these are the 4 levels of IV. And ये खुद naturally occurring होते हैं. So again Quasi experiment बन जाएगा. And basically are you gonna be included in all the 4 eye movements? Well, yes, क्योंकि जब तुम सोते हो तो तुम शायद चारों के चारों eye movement के अंदर आ सकते हो एक ही रात के अंदर, right? तो when you dream you can look horizontally, you can look vertically, you can look horizontal and vertical at the same time. Yeah, you can have literal or no eye movement as well. तो मुमकिन ही नहीं है कि तुम सिर्फ एक ही टाइप ऑफ आई मूवमेंट दिखाओगे, एक ही टाइप ऑफ आई मूवमेंट डायरेक्शन दिखाओगे. यू माइट शो ऑल 4. तो क्योंकि तुम चारों कंडीशंस के अंदर आ रहे हो तो इट्स ऑल्सो गोना बी कंसिडर्ड अ रिपीटेड मेजर डिज़ाइन. ऑलराइट, तो आई होप दैट्स क्लियर. क्वेश्चन, डीमेंट क्लाइटमैन के अंदर द एक्सपेरिमेंट समटाइम्स एंटर्ड द रूम एंड सवाल पूछता है
तो what type of interview could the experimenter ask? Well, इन्होंने highlight तो नहीं किया, तो ये basically पूछ रहे हैं कि what type of interview could have been used. तो basically तुम तीनों लिख सकते हो, structured, semi-structured और unstructured. एंड बेसिकली तुम्हें बताना पड़ेगा कि इससे फ़ायदा क्या होगा. स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के अंदर इसका मतलब है कि सबके लिए सवाल सेम होंगे. तो बेसिकली यू माइट कंपेयर देयर आंसर्स टू अदर पार्टिसिपेंट्स अबाउट देयर ड्रीम. सेमी स्ट्रक्चर्ड के अंदर तुम कुछ कुछ सवाल के ऑर्डर चेंज कर सकते हो, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि इवन दो यू आर गोना आस्क द ओवरऑल सेम क्वेश्चंस फॉर एवरी सिंगल पार्टिसिपेंट, लेकिन कुछ यूनिक इन्फॉर्मेशन के लिए you can ask specific questions to a participant regarding their specific dreams. And unstructured can you'll ask different questions different people. So if the basic it's useful because if many people saw different things, so her participant के हिसाब से you might ask different questions which will give you huge amount of qualitative data. And अगर तुम हर किसी के लिए एक ही सवाल पूछोगे तो even though their dream is different, तुम अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू से इसको काउंटर कर सकते हो कि अनस्ट्रक्चर्ड के अंदर तुम हर किसी से अलग अलग सवाल पूछ सकते हो. इट माइट हेल्प यू अंडरस्टैंड और एक्सप्लोर अदर ईच एंड एवरी पर्सन ड्रीम इन डेप्थ. सो अनस्ट्रक्चर्ड के अंदर इज अ मिक्स ऑफ बोथ के इवन दो यू कैन कंपेयर अदर पीपल विद अदर पीपल क्योंकि क्वेश्चन सेम है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो यू कैन आस्क सर्टेन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पीपल्स ड्रीम इफ़ यू नीड टू आस्क देम. Alright, so structured interview again, क्या फ़ायदा है? is reliable क्योंकि हर किसी एक ही सवाल पूछ रहे हो, and is objective क्योंकि you can compare their answers. तो क्योंकि questions के order of questions सबके लिए same है, तो is also going to act as a control as well. Semi structure के अंदर again you can get detail if you ask some questions which are different to other people. Unstructured के अंदर again क्योंकि हर किसी के सवाल अलग होंगे, तो बेसिकली यू माइट नीड टू आस्क डिफरेंट क्वेश्चन फ्रॉम डिफरेंट पीपल विच कैन हेल्प यू गेट मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सर्टेन इंडिविजुअल्स. ठीक है, एंड यू कैन एक्सप्लोर इट इन डेप्थ. ऑलराइट, तो हमने एम के अंदर दिखाया था. एम जब मैंने तीनों एम को ब्रेक डाउन किया था कि इसको किस तरह स्टडी करते हैं, इसको किस तरह स्टडी किया जाएगा, इसको किस तरह स्टडी किया गया था. Now I'm going to tell you exactly what happened. Alright, so basically what happens is stage 1, the participant comes into a lab and हमेशा daytime के अंदर आता था, and they have a meeting and the experiment tells the participant कि भाई you are not allowed to have caffeine or alcohol. क्योंकि we know कि caffeine and alcohol may influence sleep, तो they're an extraneous variable. तो we make sure कि no one has caffeine, no one has alcohol क्योंकि उनके sleep cycles, your sleep pattern disturbed now, वरना study का validity के अंदर मसला आ जाएगा. तो basically person comes in a daytime, no alcohol, no caffeine, and when it's time to sleep, so the participant would sleep just before their normal daily routine वाला time. तो if you sleep at 10, तो experiment के अंदर भी you're gonna sleep at 10. So when you sleep, you are going to sleep in a quiet dark room. रोशनी नहीं थी, तो you're gonna sleep in a quiet dark room. And when you're sleeping, तुम्हारे सर के ऊपर जो है electrodes attach होते हैं, क्योंकि obviously electrodes के ही through हमें पता चलेगा ना, तो के EEG and EOG के अंदर क्या रिकॉर्ड आएगी. If we attach nothing to your head, तो EEG and EOG won't be able to record things. तो when you sleep in your normal timing in a quiet dark room, तुम्हारे सर के ऊपर electrodes attach किए जाते हैं. आइज़ के नियर इलेक्ट्रोड्स EOG की तरफ जाते हैं, एंड सर के ऊपर जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो EEG की तरफ जाते हैं. एंड इलेक्ट्रोड्स को हम आखिर में एक साथ बांध देंगे पोनीटेल करके, क्योंकि अगर बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स बिखरे पड़े हों तो शायद तुम्हारा सर हेड मूवमेंट में थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी. तो सारे इलेक्ट्रोड्स को हम पोनी की तरह एक साथ बांध देंगे, सो इट अलाउज फॉर फ्री हेड मूवमेंट. जैसा you can see here कि electrodes बिखरे पड़े हुए हैं, तो it might not allow you to move freely. लेकिन अगर ponytail में कर दिया तो electrodes एक ही जगह समेट जाते हैं, which allows for head movement. And this point is very very crucial क्योंकि प्रोसीजर के ना पूछते हैं कि भाई Dement and Kleitman के अंदर पूरा स्टडी का प्रोसीजर बताओ. तो प्लीज़ डोंट स्किप दिस पॉइंट कि ponytail के अंदर गैदर किया गया था.
पोनीटेल गैदर करने के बाद ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रोड्स थे EEG ने EOG की तरफ कनेक्ट किए जाते थे. तो each of this step is important to remember. Alright. तो बेसिकली हमने अभी डिस्कस किया था कि EEG के अंदर कलेक्ट होते थे एंड द EEG वो पूरी रात चलता था, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा ना तुम कौन सी स्लीप किस स्टेज में हो, REM और NREM. एंड इफ वी नीड टू वेक यू अप, हमने डिस्कस किया था द एक्सपेरिमेंटर विल रिंग द डोर बेल टू वेक यू अप. तो दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ कंट्रोल एज वेल, क्योंकि डोर बेल अगर सबके लिए रिंग करेंगे तो अब सेम वॉल्यूम आएगा, सेम तरीके से उठाएंगे. इफ़ लेट्स सपोज कि अगर हम हर किसी को हाथ मार के उठा दे तो शायद हर किसी को एक ही तरीके से नहीं उठा सकते. किसी को ज़्यादा दूर से धक्का मारे, किसी को बहुत हल्के से धक्का मारे, तो द डोर बेल अश्योर्स कि हर कोई एक ही तरीके से उठाया जाएगा. तो इट्स ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कंट्रोल. Alright, so after the wake up, they were supposed to tell were they dreaming or not dreaming. If they were dreaming, they were supposed to tell how long they what did they see when they were dreaming, and kabhi-kabhar they would also tell कि dream कितनी देर तक देख रहे थे, 5 minutes or 15 minutes. तो basically तीनों एम एक साथ होते थे कि इट वॉज उनके एम 1 अलग से हो रहा है, एम 2 अलग से हो रहा है, एम 3 अलग से हो रहा है, तीनों एम शायद एक ही साथ स्टडी कर सकते थे. एंड आफ्टर सवालात पूछे गए थे अगर तो दे वुड बेसिकली गो बैक टू स्लीप आफ्टर 5 minutes. इफ़ दे वर वोकन अप एंड से दे वर नॉट ड्रीमिंग, तो ये अपना कंटेंट नहीं बताएंगे टेप रिकॉर्डर के अंदर, एंड दे वुड सून गो बैक टू स्लीप व्हेन दे सेड नहीं मैं ख्वाब नहीं देख रहा था, ओके गो बैक टू स्लीप. एंड इसके बावजूद भी अगर एक्सपेरिमेंट का कोई सवाल होता था तो ही वुड समटाइम्स कम इन टू आस्क अ फ्यू क्वेश्चंस. उसके बाद द एक्सपेरिमेंट वुड टेक द वीडियो टेप टेप रिकॉर्डर एंड ट्राई टू लिसन टू इट. लेकिन नींद के अंदर कुछ लोग शायद सही से नहीं बोल पाते, तो ओनली कोहेरेंट मतलब प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड सेंटेंसेस, कोहेरेंट डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस वर काउंटेड. लेकिन जो फ्रैगमेंटेड थे, जो वेग डिस्क्रिप्शंस थे, उसको डेटा के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया गया था. ऑलराइट, तो हमने बोला था कि स्टडी के अंदर इफ़ यू रिमेंबर के पार्टिसिपेंट को पूरे स्टडी के अंदर 50 to 77 टाइम्स उठाया गया था, राइट. सो बेसिकली what they did that they had was 4 awakening schedules. Imagine कि तुम 12 बजे सोते हो, राइट. तो 12 बजे इमेजिन इफ़ यू स्लीप, तो इन्होंने पूरी रात को दो घंटे के अंदर डिवाइड किए गए थे. तो द फर्स्ट 2 hours would be रात के 2 बजे, द सेकेंड 2 hours would be रात के 4 बजे, थर्ड 2 hours would be 6 बजे, एंड द फोर्थ 2 hours would be 8 बजे. तो बेसिकली 21% ऑफ द टाइम्स पार्टिसिपेंट को 2 घंटे बाद उठाया गया था, 29% ऑफ द टाइम्स पार्टिसिपेंट को 4 घंटे बाद उठाया गया था, 28% ऑफ द टाइम्स पार्टिसिपेंट को 6 घंटे बाद उठाया गया था, एंड 22% ऑफ द टाइम्स पार्टिसिपेंट को 8 घंटे बाद उठाया गया था. तो इन्होंने दो आवर्स का सेगमेंट किया गया था, फर्स्ट 2 hours, सेकेंड 2 hours, थर्ड 2 hours, एंड फोर्थ 2 hours. एंड बेसिकली द परसेंटेज शो के हर 2 hours के हिसाब से पार्टिसिपेंट कितने परसेंटेजेस ऑफ अवेकनिंग्स फर्स्ट 2 hours के अंदर हुई, कितने परसेंटेज अवेकनिंग सेकेंड 2 hours, थर्ड 2 hours, एंड फोर्थ 2 hours के अंदर हुई थी. सो यू कैन सी सारे अवेकनिंग्स वर ऑलमोस्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. कोई शायद अपार्ट फ्रॉम द सेकेंड 2 एंड द थर्ड 2 इतना ज़्यादा शायद वेरिएशन नहीं है अवेकनिंग्स में. तो वी कुड से दैट द patterns of awakening was evenly distributed in all 4 2 hours division of the night. Alright. तो we said कि हमारे पास 5 लोग रह गए थे, right? The 4 withdrew. तो the 5 people we are left, हमने उनके initials दे में PM and KC, right? तो PM and KC 2 लोग ये हैं. Basically they were woken up at random. तो लेट्स सपोज कि PM के AC के ऊपर कोई ना कोई नंबर एलोकेट किया गया होगा. PM इज़ नंबर 5, या PM हैज़ एन ऑड नंबर, KC इज़ एन इवन नंबर. they're gonna use a random number table and randomly नंबर निकल आएगा. एंड लेट्स सपोज इवन नंबर आता तो जिसका भी इवन नंबर था उसको उठाएंगे, जिसका ऑड नंबर था उसको उठाएंगे.
तो ये रैंडमली उठा देते पीएम एंड केसी को, सिर्फ पीएम एंड केसी को रैंडमली उठा देते, बाकी लोग का वेकनिंग के क्राइटेरिया कुछ और है। तो पीएम एंड केसी को रैंडमली उठा देते तो ऑब्वियसली इसका ये मतलब है कि एक्सपेरिमेंटल बायस नहीं होगा, क्योंकि रैंडमली उठाने से एक्सपेरिमेंटर का कोई ना कोई बायसनेस के चांस नहीं होंगे। तो पीएम एंड केसी वुड अलाउ अस टू मेक श्योर कि हमारे अवेकनिंग्स या पार्टिसिपेंट को कब उठाएं, इस चीज़ के अंदर कोई एक्सपेरिमेंट का दखल अंदाज नहीं हो, इट्स ऑल रैंडम, सो देयर इज लेस चांसेस ऑफ बायसेस टेकिंग प्लेस। नाउ डीएन को हमने 3 दफ़ा आरईएम के अंदर उठाया, आरईएम, तो 3 दफ़ा आरईएम के अंदर उठाया, देन 3 दफ़ा एनआरईएम के अंदर उठाया। तो बेसिकली डीएन को हमने इस तरीके से इसलिए उठाया था क्योंकि हो सकता है what if you are woken up 3 times in REM and 3 times in NREM, will you fake your answers? क्यों? If you तुम्हें REM के अंदर उठाया, तुम्हें दोबारा REM के अंदर उठाया, फिर दोबारा REM के अंदर उठाया, हो सकता है कि the third time that you're waken up in REM, you might fake your answers क्योंकि you might realize what's happening. Same thing अगर तुम्हें NREM के अंदर उठाया, फिर NREM के अंदर उठाया, now you know कि third time NREM के अंदर उठाएंगे तो now you expect कि तुम्हें NREM को उठाया जाएगा, तो you might already have an answer planned क्योंकि you now figured out कि तुम्हें कब उठाएंगे, तो you might lie, तो you might show demand characteristics. तो वी वांट टू सी कि डू यू शो डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स अगर तुम्हें 3 दफ़ा आरईएम एंड 3 दफ़ा एनआरएम के अंदर उठाएं। तो इफ़ यू डू शो हमें इससे पता चलेगा, हम तुम्हारा रिजल्ट यहाँ से कंपेयर करेंगे, अगर तुम्हारा रिजल्ट इससे मैच नहीं होता इसका मतलब तुमने डिमांड कैरेक्टरिस्टिक दिखाया। इन रैंडमली लोग के जो रिजल्ट्स आए और तुम्हारे रिजल्ट्स आए सेम है या सिमिलर आए, तो इसका मतलब कि तुमने डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं उठाया ना। डब्ल्यू डी के साथ भी हमने कुछ चक्कर किया था। WD को हमने बोला कि भाई हम तुम्हें सिर्फ REM के नहीं उठाएंगे, लेकिन हम तुम्हें दोनों में उठाते थे, बट WD वॉज डिसीव्ड क्योंकि हमने उसको सिर्फ REM के अंदर उठाया था, दोनों उठाने को बोला था, लेकिन हम असल में उसको दोनों में उठाते थे। तो इमेजिन दिस कि तुम्हें अगर बताया गया कि तुम्हें REM के अंदर उठाएंगे तो यू डोंट एक्सपेक्ट कि तुम्हें NREM के अंदर उठाएंगे, तो क्या तुम्हारा आंसर्स क्या इसकी वजह से इन्फ्लुएंस होंगे? वुड यू लाई या वुड यू गिव ऑनेस्ट आंसर्स? तो वी आर ऑल्सो गोना चेक कि इसके अंदर क्या डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं कि नहीं। अच्छा, DN wasn't told, DN को हमने बस उठाया था। DN अगर फिगर आउट करता है कि DN के इसके साथ क्या होता है, ही इज़ गोइंग टू फिगर आउट बाय हिमसेल्फ। एक्सपेरिमेंट इसको नहीं बताया था शुरू से तुम्हें ऐसे उठाएंगे, इसको बगैर बताए इस तरह उठाना शुरू हो गया था, इनको भी बगैर बताए इस तरह उठाना शुरू हो गया था। सिर्फ इसको पता था कि मुझे कैसे उठाएंगे, लेकिन अगेन इसको डिसीव किया गया था। द लास्ट पर्सन IR, इसको एक्सपेरिमेंट अपनी मर्जी से उठाएगा, मेरी मर्जी। ये मैंने और मार्च से पहले स्लाइड बनाया था, तो दिस डायलॉग हैज़ नथिंग टू डू विद दैट। खैर, तो इस IR वुड बी वोकन अप थ्रू एक्सपेरिमेंटर्स चॉइस। क्यों? वी डोंट नो द रीज़न टू इट। कभी कभार हो सकता है कि एक्सपेरिमेंटर हमारी फील के भाई हमने NREM के अंदर कम बंदों को उठाया था, या एक्सपेरिमेंटर हमारी फील के भाई हमने बहुत कम लोगों या हमने इससे सवाल नहीं पूछे, या 15 मिनट वाले सेकेंड एम के अंदर हमने 15 मिनट बाद लोगों को कम उठाया, तो उसको कॉम्पोजिट करने के लिए हमें रिजल्ट चाहिए, तो शायद एक्सपेरिमेंटर माइट यूज IR टू fulfill the criteria, but that's just an assumption. So anyways, you might understand by now IR, WD and DN might show different type of demand characteristics. यहाँ पे experimental bias आ सकता है, यहाँ पे demand characteristics आ सकता है, यहाँ पे order effect आ सकता है। So we're going to compare these 3 people with these 2. अगर इन randomly people के साथ इन तीनों के आंसर सिमिलर आते हैं तो इसका मतलब no one showed biasness। अगर किसी का आंसर कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा आता है तो इसका मतलब किसी ने बायसनेस शो की है। तो बेसिकली यू नीड टू रिमेंबर का नाम याद करना है, और यू नीड टू रिमेंबर कि इसको किस तरीके से उठाया गया था। तो इन समरी अभी तक प्रोसीजर क्या होता है कि भाई द पार्टिसिपेंट्स कम टू द लैब,
नो अल्कोहल, नो कैफीन, लेड टू अ क्वाइट डार्क रूम, इलेक्ट्रोड सर पर अटैच किए जाते हैं, नियर द आइज, ऑन द स्कैल्प, पोनीटेल की तरह बांध देते हैं, फिर EEG runs through the night to record brain activity. डोरबेल के थ्रू उठाते हैं तो दे आस्क यू कि भाई ख्वाब देख रहे थे नहीं देख रहे थे, ये सवाल पूछने के तुम्हें NREM REM के अंदर उठाएंगे, दोनों के अंदर ये सवाल पूछने के लिए कि तुम ख्वाब देख रहे थे नहीं देख रहे थे, ये NREM और REM के अंदर दोनों उठाते हैं. तुम किसी देर तक ख्वाब देख रहे थे, इस सवाल के लिए तुम्हें 5 या 15 मिनट बाद उठाएंगे. एंड let's suppose if you were dreaming, so you were supposed to tell what you were dreaming in a tape recorder. If you were not dreaming, you were allowed to go back to sleep, and you would go back to sleep. Eventually, after 5 minutes, you were woken up through a doorbell, and experimenter had some other questions. तो खुद आके सवाल पूछ लिया करता था. So basically, this is what happened. So I hope this is clear. And हमने IVD भी डिस्कस कर लिया था. All right. तो बेटा पूरा प्रोसीजर हो गया. Now we come on to results. Alright, तो basically थोड़े general results हैं. These results are not connected to the aim. ये थोड़े extra findings हैं that they did not know before, but you know this is new information to them. तो इससे पहले इनको ये चीज़ नहीं पता था. But from this study they found out कि भाई you know people की ख्वाब के durations they vary. So they found out that a dream could be as short as 3 minutes or as long as 50 minutes. And average dream time for the participants in their study was 20 minutes. And let's suppose that you know रात बढ़ती जा रही है. तो let's suppose अगर तुम्हें 2 बजे उठाते हैं and compared to that तुम्हें सुबह के 6 बजे उठाते हैं, तो 6 बजे is much more later into the night. तो जितना ड्यूरेशन जितना टाइम बढ़ता रहेगा उतना ड्रीम्स की ड्यूरेशन बढ़ती रहेगी. एंड यू कैन सी दिस ऑन अ ग्राफ. इफ़ यू कंपेयर इसके तुम्हारे ग्राफ के अंदर 4 REM नज़र आ रहे हैं, तो 4 REM साइकिल्स हैं. इफ़ यू सी के भाई जितना हम टाइम बढ़ता जा रहा है उतना REM का ग्राफ थिक हो जाता जा रहा है, मतलब REM की ड्यूरेशन बढ़ती जा रही है. तो दिस इज व्हाट टेल्स यू कि ड्रीम्स गेट लॉन्गर एज द नाइट प्रोग्रेसेस. And participants in REM can show 2 to 100 eye movements. All right. So they found something else. Before you sleep, बस नींद से थोड़े सेकंड पहले the EEG is going to show brain waves same pattern of that of REM. तो if you are about to go to sleep, तुम्हारे brain waves जो हैं REM की तरह बिल्कुल मैच होंगे. लेकिन फ़र्क क्या है कि भाई आंखें नहीं हिलती होती. तो बिफोर द स्लीप तुम्हारे ब्रेन वेव्स सिमिलरली थोड़ा बहुत REM के तरीके से मिलते हैं, तो बट इवन दो आई मूवमेंट नहीं होती. ऑलराइट, सो दे आल्सो फाउंड वन मोर थिंग कि एक REM से दूसरा REM तक जो ड्यूरेशन है फॉर अ पर्सन सेम रहेगा. फॉर एग्जांपल इफ़ आई स्लीप, मेरा REM जो है REM 1 एंड REM 2 के बीच में जो फ़र्क है दैट्स 50 मिनट्स. तो मेरा तीसरा REM कब आएगा? 50 मिनट्स. चौथा REM कब आएगा? 50 मिनट्स बाद. तो REM के जो इंटरवल्स हैं दैट इज़ इक्वल फॉर मी, बट इज़ इट सेम फॉर एवरीवन एल्स? नहीं. तो REM के जो इंटरवल है इट्स सेम फॉर अ पर्सन, बट इंडिविजुअल डिफर करता है. यू माइट हैव REM के इंटरवल्स ऑफ 30 मिनट्स एंड तुम्हारे लिए हमेशा 30 मिनट्स रहेंगे, बट फॉर मी आई माइट हैव एन REM इंटरवल 50 मिनट्स और मेरे लिए हमेशा 50 मिनट्स रहेंगे. तो इंडिविजुअल डिफर करता है. तो व्हाट्स द लॉन्गेस्ट REM इंटरवल दैट they found the longest to be 104 and the shortest to be 70, and the average REM to REM gap was 90 minutes. Alright, so if you are woken up in NREM, which sleep stage will you go back to? According to the results, इन्होंने बोला कि अगर तुम्हें NREM के अंदर उठाएंगे you will go back to NREM. लेकिन अगर हम तुम्हें REM के अंदर उठाते हैं तो you will go back to REM, लेकिन तुम ख्वाब
फिर ड्रीम नहीं करोगे. तो लेट्स सपोज इफ यू ड्रीमिंग and if you're dreaming you are in REM. So if I wake you up you will go back to sleep, you will still go to REM, but लेकिन तुम्हारा ख्वाब कंटिन्यू होगा. फिर ख्वाब कब आएगा? इन द नेक्स्ट REM के अंदर. Alright, so these were some general results. Aim 1. When does dream occur? REM or NREM? Well, basically जो bold वाले लोग हैं, bold जो first 5 people who are bold, ये the 5 people who are left, and जो बाकी जो हैं जिनके bold नहीं हैं, वो are the people who withdrew. इनके नाम याद करना ज़रूरी नहीं है. You will have to remember the participant who जिनके नाम bold में हैं. Alright. तो let's see. When does dream occur? ड्रीम REM के अंदर करो था NREM के अंदर. तो एज यू कैन सी REM के अंदर जो है 152 दफ़ा ड्रीम रिकॉल हुआ था एंड 39 दफ़ा ड्रीम रिकॉल नहीं हुआ था. एंड कंपेयर टू NREM, ड्रीम सिर्फ NREM के अंदर 11 दफ़ा रिकॉल होता एंड NREM के अंदर ड्रीम रिकॉल 149 दफ़ा नहीं हुआ था. इसका मतलब यह है कि आउट ऑफ 191 REM के awakenings you dream 152 times, and out of 160 NREM awakenings you dream only 11 times. तो guess किसके अंदर ड्रीम ज़्यादा होती है? REM के अंदर. तो this results prove कि भाई REM के अंदर ड्रीम ज़्यादा होती है. तो aim 1 का रिजल्ट हमें पता चल गया, but wait a minute. तो now the confusing thing is कि it's not basically ड्रीम रिकॉल REM के अंदर 152 है, नो रिकॉल 39 है. इट्स नॉट ज़ीरो. मतलब REM के अंदर कभी कभार लोग ड्रीम रिकॉल नहीं करते एंड सिमिलरली NREM के अंदर ड्रीम्स थोड़ी बहुत आती हैं, 11 हैं, इट्स नॉट ज़ीरो. तो दोनों जगह ड्रीम रिकॉल भी आ रहे, दोनों जगह ड्रीम रिकॉल नहीं आ रही, तो व्हाई इट्स हैपनिंग? सो व्हाट दे फाउंड आउट इज अ सिंपल थिंग. ऑलराइट, तो REM के अंदर ड्रीम आती है एंड NREM के अंदर ड्रीम नहीं आती. That we know. So let's suppose you were dreaming and NREM आ गया and now you're not dreaming. जैसे तुमने NREM हिट किया उसके 8 मिनट के अंदर मैं तुम्हें उठाया. मिसाल के तौर पर जैसे ही तुमने NREM के अंदर आए, इसका मतलब ये कि तुम REM में थे ना पहले, जब भी तुम NREM के अंदर आए. तो when you're sleeping, you're dreaming, and now you're in NREM, so you no longer dream, but I wake you up within 8 minutes of your NREM. मतलब अगर मैंने तुम्हें NREM के अंदर 8 मिनट के अंदर उठाया होगा तो तुम्हारे REM को कितने मिनट गुजर चुके होंगे? Under 8 minutes. So if I wake you up inside 8 minutes of your NREM, हो सकता है कि you might still remember the dream that you had in REM, and that's why certain people recall their dreams in NREM. हालांकि वो ड्रीम NREM के अंदर नहीं आए थे, that those dream occur in REM. लेकिन क्योंकि मैंने तुम्हें 8 मिनट के अंदर उठाया था from your dream, so you remember them in NREM nonetheless. That's why वो recordings आई थी. So 17 times participants were woken up in NREM within 8 minutes. So you can see if that happens, so 29% of the people recall the dream. But what happens if I wake you after 8 minutes? So if I wake you after 8 minutes, you will forget your dream. So that's why you no longer are able to recall dreams in REM, because you forget the dream that you had in REM, क्योंकि 8 से ज़्यादा हो चुके हैं. So 132 people were woken up after REM, after 8 minutes in NREM, and उनके पास जो है less than 5% of people recall the dreams. So basically, if I wake you up within 8 minutes, you will remember the dream. If I wake you up after 8 minutes, you will not remember the dream. Alright. Now we want to see one thing. Demand characteristics आई थी कि नहीं आई थी?
ऑलराइट, तो इफ़ यू आर एबल टू फिगर आउट, डीएन की बात करते हैं, इफ़ यू आर एबल टू फिगर आउट तुम्हें कब उठाया जाएगा, यू कैन प्रिडिक्ट अब कब, मिसाल के तौर पे आर एम अब कब उठाएंगे तुम्हें, यू माइट एबल टू प्रिडिक्ट कि तुम्हें आर एम के अंदर उठाया जाएगा. सो इफ़ यू आर एबल टू प्रिडिक्ट तुम्हें कब उठाया जाएगा, तो आर यू सपोज टू बी मोर राइट या मोर रॉन्ग. तो इफ़ यू कैन करेक्टली प्रिडिक्ट कि तुम्हें कब उठाया जाएगा, यू विल बी मोर करेक्ट. सो वी नाउ नो कि आर के अंदर ड्रीम आती है, NREM में ड्रीम नहीं आती. सो लेट्स सी, DN से इसके 70 दफ़ा ड्रीम आई थी, पर ही REM के अंदर इसने नो रिकॉल 9 दफ़ा बोला है. तो REM के अंदर इसने 9 दफ़ा गलती की है. NREM के अंदर ड्रीम नहीं आती, लेकिन इसने बोला कि NREM के अंदर इसको 3 दफ़ा ड्रीम आई थी. तो इसने कुल मिला के 12 दफ़ा गलती की है. ऑलराइट, इसने गलती 12 दफ़ा की है. तो even though he could predict, if he could predict इसको कब उठाया जाएगा, he shouldn't be wrong, but he's still making errors. कोई बात नहीं. To check demand characteristics, what we have to do is we have to compare DN with WD. See, DN is supposed to be more correct क्योंकि he can predict उसको कब उठाया जाएगा, but WD को हमने झूठ बोला था. हमने उसको बोला था कि भाई तुम्हें हम REM के अंदर उठाएंगे, ठीक है, हम तुम्हें इसको दोनों के अंदर उठा रहे हैं. तो obviously WD is going to make a lot of mistakes. तो WD REM के अंदर नो रिकॉल 5 दफ़ा आता है, एंड NREM के अंदर ड्रीम रिकॉल 1 दफ़ा आता है. तो WD makes 6 mistakes. What does this mean? तो DN ने ओवरऑल जो है 47.1 दफ़ा एरर दिखाया, even though he could predict किसको कब उठाया जाएगा. WD हालांकि उसको डिसीव किया गया था, he made total error of 13.9. तो even though WD was lied to, WD showed lesser error than DN, who could actually predict उसको कब उठाया जाएगा. तो hold on, रिजल्ट जो है उल्टे होना चाहते हैं. DN was supposed to make lesser errors and WD was supposed to make more errors, लेकिन इसके लिए उल्टा आ रहा है. तो इसका मतलब ये कि डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स शो नहीं हुई थी. अगर DN का एरर WD से कम आता, इसका मतलब ये होता था कि डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स शो हुई थी. बट बिकॉज DN was more wrong and WD was more correct, this shows that there is no demand characteristics and no practice effect. Alright. We also discussed कि भाई आपके फर्स्ट स्लीप जो है चार सेगमेंट में डिवाइड है, 2 आवर करके. तो as you can see, the dream recall ability increases after as the night progresses. तो मिसाल के तौर पे, क्योंकि हमने बोला था कि REM duration increases as the night goes on, so you are likely to remember more dream. That's why as the night goes on you are less likely to forget. तो क्योंकि सबसे लंबी जो REM की स्टेज आएगी, that's gonna be happening in the 4th 2 hours. तो that's why 4th 2 hours का जो no recall है, that's the least compared to the first 2 hours जिसके अंदर 19 दफ़ा no recall आता है, क्योंकि the first 2 hours has the shortest REM duration. So as the night goes on, REM length increases, which hence increases the ability to remember dreams, and hence first second hour के अंदर there was lesser chances of not recalling the dreams. Alright, so aim number 2, 5-15. We want to see कि भाई participants अगर 5 मिनट बाद उठाते हैं, what do they say? And अगर 15 मिनट बाद उठाते हैं, what do they say? Alright, so if we wake up participants after 5 minutes, participants were total 46% correct. मतलब they also said they were dreaming for 5 minutes and they were 6 times wrong. तो 5 minutes के अंदर 88% correct आया था, but 15 minutes के अंदर 78% correct आया था. तो participants are able to give correct estimates for 5 minutes rather than 15 minutes. DN, however, showed some unique results. DN जो साहब थे 5 मिनट के अंदर तो सही परफॉर्म करा था,
लेकिन 15 मिनट्स के अंदर 50-50 पे आ गया. इफ़ यू लुक एट DN, वो 5 दफ़ा करेक्ट है, 5 दफ़ा इनकरेक्ट है इन 15 मिनट्स वाले सेगमेंट सिनेरियो के अंदर. तो दिस शो दैट DN जो है, DN के अंदर एक स्पेसिफिक चीज़ नज़र आई थी कि DN could not recall end of his dreams. तो DN could only recall the beginning of his dreams. तो अगर 15 मिनट का ख्वाब है एंड इसको आखिरी की चीज़ याद नहीं है, तो obviously he is going to think कि भाई इसके ख्वाब छोटे ड्यूरेशन के होंगे. तो that's why DN made more errors in the 50 minutes. But अगर ख्वाब 5 मिनट के हैं, अगर तुम्हें आखिरी चीज़ याद नहीं है, you're gonna still kind of remember कि ख्वाब जो अगर शुरू के भी चीज़ें याद रहें, तो you might still be able to figure out कि ख्वाब छोटे ड्यूरेशन के लिए आए थे. But if you have a longer dream and उसकी एंडिंग याद नहीं है, तो you might mistakenly say कि तुम्हें ख्वाब जो है छोटे ड्यूरेशन के लिए आए थे. That's why DN showed more errors in 15-minute scenario compared to 5-minute scenario. Alright. They also found a few other things. If you dream longer, do you use more words to describe your dream? Yes. So the longer you dream, the more words you use to describe your dream. So there's a positive correlation. जिसकी values मैं सामने लिख दी, 0.4 to 0.71, which shows us positive strong correlation. Alright. But what they also found out, okay, let's suppose हमें पता है कि by the longer you dream, the more words you use. But how true is that? Let's suppose कि तुम्हें 50 मिनट बाद उठाते हैं and तुम्हें 15 मिनट बाद उठाते हैं, and then we compare how many words you use. What they found out that there was no actual difference after 15 minutes. तो 15 मिनट बाद जब भी तुम्हें उठाएंगे, जितनी देर बाद उठाएंगे, the amounts of words you use is going to be same. क्योंकि after 15 minutes ज़्यादातर लोगों को ख्वाब याद नहीं रहता है, तो obviously अगर लोगों को ख्वाब याद नहीं रहेंगे तो they're gonna use lesser words. तो the longer you dream, the more words you use. Yes, that is true. But after it crosses the 15 minutes margin, that difference is not seen. क्योंकि after 15 minutes, चाहे बंदा जितनी देर तक ख्वाब देख रहा है, their number of words is going to remain same. क्योंकि उनको ख्वाब पूरा याद नहीं रहेगा. Alright. So you also remember that the tape recording that the experimenter used, उसमें से 152 recording में से उसको सिर्फ 26 डिस्कार्ड करने पड़े क्योंकि 26 were either incoherent या weak थे. तो that's also something कि 152 में से 26 recordings ज़ाया हो गई थी. One quantitative result from the dream duration estimate. So dream duration estimate is the second aim, dream recall is the first aim, and the dream content is the third aim. So dream duration estimate के अंदर ये result पूछ रहा है कि भाई what was the result of it numerical format. So you can write 88% people were correct in the 5 minutes and 78% of the people were correct in the 88% of the times people were correct in the 5 minutes trial and 78% of the times people were correct in the 15 minutes trial. तुम्हें हर किसी के इंडिविजुअल आंसर याद करने की ज़रूरत नहीं है. जैसे इसके अंदर ओवरऑल स्कोर याद कर लो. यस, तुम्हें सिर्फ डी एंड डब्ल्यू डी के शायद टोटल नंबर ऑफ एरर्स याद करने होंगे, बट इसके अंदर हर किसी के स्कोर याद करने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ ओवरऑल स्कोर्स याद रखो, क्योंकि सी आई रियलाइज के बहुत रिजल्ट्स हैं इसके अंदर, तो ओवरऑल डेटा याद कर लो. Dement Kleitman found a positive correlation between REM duration number of words. Explain what is meant by positive correlation. एक वेरिएबल बढ़ेगा, दूसरा वेरिएबल also increases. तो जितना लंबा REM होगा उतना ज़्यादा तुम वर्ड्स इस्तेमाल करोगे to describe your dream. One result about dream recall, first aim, and what is the result about dream estimation duration, second aim. You must use data. तो basically REM और NREM के अंदर जो ख्वाब कब आता है उस एम के रिजल्ट्स लिख दोगे, और दूसरा जो है 5 and 15 मिनट्स के अंदर
के हिसाब से तुम्हारा क्या आंसर आता है लोगों का ड्रीम एस्टिमेशन, उसका भी आंसर लिख दोगे. तो यू कैन ओवरऑल स्कोर्स लिख दोगे यहाँ पे, ठीक है ना, एज यू कैन सी. एंड मैंने बोला था कि सिर्फ डी एन का शायद इंडिविजुअल स्कोर एंड डब्ल्यू डी का इंडिविजुअल स्कोर याद करना पड़ेगा, बाकी सबके तुम्हें ओवरऑल स्कोर याद करने हैं. एंड दैट्स व्हाट यू सी इन द मार्किंग स्कीम. थर्ड एम, does your eye movement direction correlate या match with what you are dreaming instead? तो the answer is yes. जो तुम्हारा आंखों का डायरेक्शन होगा वही उसके हिसाब से तुम ड्रीम कर रहे होगे. तो बेसिकली एम 3 के हिसाब से उनके पास 35 रिजल्ट्स आए थे जिसके अंदर सिर्फ 35 अवेकनिंग्स थी. उसके अंदर 3 दफ़ा ड्रीम्स ऐसे आए थे लोगों के जिसके अंदर ज़्यादातर वर्टिकल आई मूवमेंट हो रहा था. तो when they were woken up, EOG के अंदर दिखाई दिया कि भाई इनके वर्टिकल आई मूवमेंट है. तो EOG के से इनका आई मूवमेंट पता चल गया. अब टेप रिकॉर्डिंग के उन्होंने क्या कहा कि यू आर सपोज टू रिमेंबर दोस ड्रीम. वन ऑफ देम सेड कि दे वर ऑपरेटिंग अ होइस्ट and they were standing at the bottom of a tall cliff and they were looking up at the various climbers and then down at the machine. So you're looking up and down, that's vertical movement. Dream number 2 is climbing a ladder and looking up and down as they climb, that's also vertical movement. The dream 3 is playing basketball, throwing the ball into a net, picking up the ball and looking down. So that's also vertical movement. Horizontal movement, yep. So horizontal movement, जिसकी eyes, जिसका ड्रीम हॉरिजॉन्टल, जिसकी आंखें हॉरिजॉन्टल चल रही थी, तो उन्होंने बोला था कि भाई दे सॉ 2 पीपल्स थ्रोइंग टोमेटोज एट ईच अदर. तो व्हेन यू थ्रो टोमेटोज तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है. तो दैट कुड एक्सप्लेन व्हाई योर आईज आर मूविंग हॉरिजॉन्टली. ऑलराइट, सो व्हाट अबाउट द ड्रीम्स व्हिच हैड लिटिल और नो आई मूवमेंट्स? तो बेसिकली 10 ड्रीम्स जिसके अंदर लिटिल और नो आई मूवमेंट्स. तो उसके अंदर क्या हो रहा था? बेसिकली दे वर लुकिंग एट एन ऑब्जेक्ट विच वॉज वेरी 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 फार अवे. तो इफ़ यू लुक एट ऑब्जेक्ट्स विच आर वेरी वेरी फार, तो तुम्हारी आंखें शायद हिलेंगी नहीं, बट यूर स्टिल ड्रीमिंग. तो 10 ड्रीम्स ऐसे आए थे जिसके अंदर लिटिल और नो आई मूवमेंट्स. एंड ड्रीम कॉन्टेंट के अंदर पीपल सेड कि दे वर वॉचिंग और स्टेयरिंग एट एन ऑब्जेक्ट दैट वाज डिस्टेंट. 2 दफ़ा ड्रीम्स ऐसी आई थी जिसके अंदर there was sudden large movement to the left side and back again. तो they were true dreams जिसके अंदर ये आई मूवमेंट्स नज़र आई थी. तो लोगों से पूछा गया what did you dream? तो they said कि भाई मैं एक गाड़ी चला रहा था, लेफ्ट से एक और गाड़ी अचानक से आती है. तो basically I was looking at that car. Second dream के अंदर the person said कि they were driving, लेफ्ट पे एक आदमी नज़र आता है, उसको सलाम करता है and they keep driving. So that could explain why their eyes moved to the left suddenly when they were dreaming. So this all shows that the eye movements actually relate with the content of your dreaming. Now mixed movements. 21 of the people showed mixed movements. जिसके अंदर बताते हैं they were either fighting, talking, or looking for something. To outline one of the dreams that reported vertical eye movement. So you can like the basketball, the ladder, or the cliff, and operating the hoist wala. Qualitative results from the dream content reports. तो इसके अंदर तुम ड्रीम बता दोगे कि लोगों ने क्या क्या देखे. Alright. So, one question. Are these eye movements similar to how your eyes move when you are awake? So basically, eye movement, जब तुम दिखाते हो सोते वक्त, we know कि now it matches the content of your dream. But does your eyes move similarly to when you're awake? तो जब तुम उठते हो उस तरीके से तुम्हारी eye move करती है. Does it move the same way when you sleep or not? तो उसको चेक करने के लिए इन्होंने क्या किया कि the 5 people who are in our study, उनके आई मूवमेंट्स रिकॉर्ड किए गए थे when they were awake, right? And basically उनके आई मूवमेंट के साथ they picked 20 other people
who did not know what's happening, उनके भी eye movements record किए गए थे. So you had 5 people from our experiment and 20 other people who did not know the aim. So they took 25 people and they recorded their eye movement when they're awake. उस record किस तरह किए गए थे? Basically they made them focus on distant object. इससे पता चलता कि भाई इनकी आंखें हिलती नहीं है. They recorded the vertical movement, they recorded the horizontal movement, whatever, and they found out that when people sleep, their eyes move the same way when they are awake. So that's an interesting finding. So what do you conclude? At the end, we know that by dreams occur mostly in REM. अगर NREM का ड्रीम आती है, it only means one thing कि तुम्हें REM की ड्रीम याद आ रही है NREM के अंदर. REM जो है, as we figured out, it gets longer the later you go into the night. Second aim से हमें पता चलता है कि भाई dreams are experienced in real time. तो अगर ख्वाब तुम 5 मिनट का देख रहे होगे तो REM भी तुम्हें 5 मिनट का आ रहा होगा. तो मिसाल के तौर पे if you're sleeping and 5 मिनट गुजर गए तो तुम्हारा ड्रीम भी 5 मिनट का आएगा. So you dream in real time. Also, the longer you dream, the more words you use. And thirdly, we found out that eye movement is correlated to the content of your dream. Alright, so basically, previous studies के अंदर सिर्फ तुम्हें याद होगा कि EEG पूरे रात चलाया था. Previous studies के अंदर सिर्फ एक दफ़ा चलाया था. एक दफ़ा चलाने से हो सकता है कि we might capture persons NREM or REM, but not both. So we don't get the complete picture. Also, we use the EOG, right? Previous studies may not have used the EOG, so they might not have picked small eye movement, जिसके अंदर little or no eye movements आता होगा, जिसकी वजह से they might have mistaken that the person is in NREM, हालांकि REM के अंदर होगा. Alright, so challenge for you guys. Try to identify this one question. Not true for Dement Kleitman. Eye movements are more frequent dreams of a distant object. People make movements. Sleeper eyes move in REM. Several REM periods per night. So eye movements are more frequent in dreams about distant objects. That's false. Because when you're looking at distant objects, your eyes don't move. Conclusion हमने discuss कर लिया था. तो generalizability not much, क्योंकि सिर्फ 9 लोग थे. आखिर में 5 हो गए. Replicability, yes. Is it reliable? Yes. क्योंकि EEG and EOG standard apparatus machine इस्तेमाल किया गया था. We can replicate this study again using the doorbell, using the EEG, using the EOG, using the tape recorder. Is it applicable? Well, it can allow for sleep scientists to study sleep. It can also help people. It can also help people with insomnia. So it can also help us to study whether people with mental disorders dream the same way as normal people or not. It has high application. Validity, lab experiment तो internal validity high थी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें control standardized थी. External validity low थी क्योंकि people are not used to sleeping in a lab. People are not used to sleeping with electrodes attached to the head. So it lacks mundane realism. Ethics, well, WD was deceived and लोगों को बार बार उठाना नींद के बीच में, it might cause them psychological harm. But people want opportunity sampling. People are allowed to sleep in their normal sleep time, and but from consent you don't see much problems क्योंकि right to withdrawal भी था, तो it's ethically sound. तो one weakness was however के 1997 के अंदर they tried to replicate Dement Kleitman study, and basically 1997 के अंदर जो study थी they did not confirm Dement Kleitman's results. उनके results कुछ और आए थे.
तो बेसिकली अगर आप स्टडी कर रहे हो डीमेंट क्लाइटमैन का बिल्कुल रेप्लिका कर रहे हो एंड रिजल्ट कुछ और आते हैं, तो इट माइट बी कंसिडर्ड एज अ वीकनेस, जो 1997 के अंदर स्टडी के अंदर आए थे कि रिजल्ट्स उनके अलग थे और डीमेंट क्लाइटमैन के रिजल्ट्स थोड़े अलग थे. Alright, so REM duration was a more valid measure of dream than number of words. So basically they're asking, okay, if we are going to measure your REM duration, why were we using REM duration to measure time rather than number of words? But it's asking, okay, if I want to figure out how long you dream, why do I need to look at your REM duration? I can just count your words and figure out how long you dream. The reason is that why some people may use lesser words when they speak, even though उन्होंने ज़्यादा देखा होगा. Some people have more vocabulary, right? So basically number of words is subjective, but REM duration is more objective क्योंकि किसी चीज़ से influence नहीं होता. So that's why REM is more valid. So if you want to check how long a person sleeps, you check their REM duration and not count their words. And that's the end of the study. बहुत लंबा था, but I hope you understood it.